Assalamu alaikum. Welcome to another exciting episode of Second Home. Today we are capturing the All India Cultural Association's event, the International Mushaira, that has been kept in the honor of Khomar Sahab. They've invited many different poets from various states in India and very popular. Today we hope to cover some conversation with them. So without any further delay, without me staying in between you and them, allow me to take you to a little talk with each one of them. और दोस्तों, ये गज़ल का आखिरी शेर मैं चाहूँगा इस शेर पर जो लोग अब तक शरीक नहीं हुए हैं वो भी शरीक हो जाए। धूप ज़्यादा, और अब इधर कोई आए ना, सारी सीटें भरी हुई हैं, मैं बता रहा हूँ। धूप ज़्यादा साए कम। अब शेर सुनिएगा। अब ज़ख्म याद रह जाएगा इंशाअल्लाह शेर। अब ज़ख्मों में ताब नहीं, अब ज़ख्मों में ताब नहीं, अब ज़ख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम। मैं तो बस लफ्ज से एक धुन हटा देता हूँ, शेर पहले से ख्यालों में लिखा होता है। आइए इस धुन को साफ करते हैं, इस मंजरनामे को और वाज़ेह करते हैं और क्लियर करते हैं। दयाए गैर का मुखबिर समझ रहा है हमें, हमारे घर में मुसाफिर समझ रहा है हमें, और यहाँ के दश्त भी गुलजार भी यहाँ वहाँ है, समझ लीजिएगा। यहाँ के दश्त भी गुलजार कर दिए हमने, वो बेवकूफ मुहाजिर समझ रहा है हमें। वो जो धरती पर चल नहीं सकता वो भी ऊंची उड़ान सोचता है। कि वो जो धरती पर चल नहीं सकता वो भी ऊंची उड़ान सोचता है, और नियतें सबकी तख्तो ताज पे हैं, कौन हिंदुस्तान सोचता है। Today we have as a guest a very popular poet from India who's visiting Kuwait. Welcome to our show, Shabina. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके बीच आ जाने का मौका मिला। इस खूबसूरत मौके पर सबसे पहले आप सबको एक शेर नज़ करना चाहूँगी। इरशाद। हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे ये तय हुआ था, हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे ये तय हुआ था, मिलें कि बिछड़ें मगर तुम्हीं से वफ़ा करेंगे ये तय हुआ था, मिलें कि बिछड़ें मगर तुम्हीं से वफ़ा करेंगे ये तय हुआ था, और कहीं रहो तुम कहीं रहें हम मगर मोहब्बत रहेगी कायम, कहीं रहो तुम कहीं रहें हम मगर मोहब्बत रहेगी कायम, जो ये ख़ता है तो उम्र भर ये ख़ता करेंगे ये तय हुआ था। बहुत खूब। बहुत खुशी है कि आज फिर मुझे आप सबके बीच आने का मौका मिला। मैं सबसे पहली बार फ़र्स्ट टाइम जब मेरी हाज़िरी हुई थी, सबसे पहली मुशायरे की शमा जो यहाँ रोशन हुई थी वो मेरे ख़्याल से 2010 में मैं सबसे पहली बार आई थी, और उस वक्त से लेकर अभी तक मैं आ रही हूँ। हमेशा मुझे आप लोगों की मोहब्बतें मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, और आज भी यही उम्मीद है कि आप सबकी मोहब्बतें अपने दामन में समेट कर लेकर जाऊँगी। इंशाल्लाह ज़रूर। यहाँ की जो कुवैत के लोग आपके लिए सुनने के इतने मुंतज़िर रहते हैं। मैं जानती हूँ आपका नाम आते ही वो डेट अपनी ब्लॉक कर लेते हैं कि बस आज शाम को तो हमने यही करना है। आपका शायरी का सफ़र किस तरह शुरू हुआ? हाँ, ये तो खैर बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन 1984 में मैं मुशायरों की इस दुनिया में मैंने अपना सफ़र शुरू किया, और उस वक्त मुझे लाने वाले थे कैफ़ी आज़मी साहब, और उसके बाद चूँकि सपोर्ट ऐसा मिल गया, मेरे हस्बैंड मिस्टर जौहर कानपुरी, आज मैं जो कुछ भी हूँ ये उनकी देन है, जो आप सबके बीच आने यहाँ तक पहुँची हूँ। तो बस, और ये सिलसिला अभी तो चल ही रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी यूँ ही चलता रहेगा, आपकी मोहब्बतें शामिल रहीं तो।
जी, आप अपना किस तरह से कर पाती हैं? जैसे काफ़ी मसरूफियात रहती होगी शायरी के लिए, आप कुवैत ही नहीं और भी कंट्रीज़ जाती होंगी मुशायरों के लिए? जी बिल्कुल, अभी पिछले मेरे ख़्याल से मैं सितंबर में अमेरिका में थी, और सिलसिला इसलिए चलता कि मेरा घर मेरे साथ रहता है, चूँकि हस्बैंड भी साथ में है और हमारी जॉइंट फैमिली है, तो घर का काफ़ी सपोर्ट हमें मिला हुआ है। तो इस वजह से हम कोई फ़िक्र नहीं रहती घर की, क्योंकि घर को संभालने वाले लोग हैं घर पे। वरना अकेले की ज़िंदगी तो बड़ी दुश्वार हो जाएगी अगर हम हस्बैंड को और बच्चों को सबको घर में छोड़ देंगे और हम अकेले इस तरह से निकल लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। यही वजह है कि हमारा घर हमारे साथ है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा है और गुजरेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने ज़िक्र किया अभी अमेरिका के दौरे पर जो आप जाने लगे हैं, तो वहाँ पर भी क्या आपको इतने उर्दू समझने वाले आपको इस तरह के मिल जाते हैं लोग जो ऑडियंस जो अप्रिशिएट करते हैं? जी बिल्कुल मिल जाते हैं। देखिए पहले तो इतने नहीं, लेकिन अब तो बहुत मुशायरे और कवि सम्मेलन भी होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पहले से ज़्यादा अब उर्दू की महफ़िलें सजाई जा रही हैं, क्योंकि पहले तो एक महदूद दायरा था, अब ऐसा नहीं है। अब दुनिया के किसी भी कोने में, हम ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं दुनिया के जहाँ उर्दू मुशायरे और हिंदी के बहुत सारे कवि सम्मेलन होते हैं, और वहाँ मेरी हाज़िरी होती है और लोगों की मोहब्बतें हमेशा मुझे मिलती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम वी आर गोइंग टू बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो। आप कुछ अपनी ऑडियंस से कहना चाहेंगे जाते जाते? बस हम ये कहना चाहेंगे कि हमें आप लोग यूँ ही मोहब्बतें देते रहें, ताकि हमें मोहब्बतें जब आपकी मिलती रहेंगी, हिम्मत मिलती रहेगी, तो मुझ में भी हौसला पैदा होगा, और इसी तरह से हमारी शायरी हम शायद कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। Allow me to introduce to you Miraj Haider. He's the backbone of this poetic society. He's the one who organizes all these events, brings all these poets together. So we must thank him for this wonderful evening. Welcome to our show. Thank you. Your name? Amina. Amna. Thank you, Amina. Tell us, how do you manage to get all these poets together? It must be a daunting task. Not at all, because all the poets, they also want they want to spread the message of peace, love, to all over the world. So it's all I love this thing, and it's a part of our culture. We go, we spread this message of love all over the world. We travel to many places like Dubai, Kuwait, and second time I'm here in Kuwait. It's always we love it. So the poets are enthusiastic themselves about coming. That's great. No doubt about it. Tell me, I would like to know, like, how does one pick a career like that? How did you get into this line of business? No, it's not a business for me, to be specific. It's just my passion. I see. Like it's in my blood, the adab, the culture, the Urdu, the poetry. Like my ancestor, my parents. I get this. I get inherited from them. So विरासत जिसे कहते yeah, हैं. विरासत में हम लोगों को मिली है. So it's like that. If you don't mind, could you tell us one poem, your favorite poetry in Urdu? जो उनका पैगाम है वो अहले सियासत जाने, जो उनका पैगाम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे. बहुत खूब. It's about spreading love, and it's kind of talking to the politicians, saying we don't really know what the politicians are trying to do, but my message is that of love. I hope I translated that well. Exactly, that's perfectly right. Okay, but before we go, I would love to know a little bit about this event. So, is all these people travel together always, or are these different? I heard the group is also going to go to the US. So, how does it all work? You select? In fact, the poets are from different parts of India. Some are from southern part of India, like from Hyderabad, from Lucknow, from Delhi, and from Kolkata. So they are here. Mr. Amir has organized such a beautiful event last year as well, and this time again. So hopefully we are going to enjoy the evening tomorrow. So inshallah. Thank you so much, Miraj Haider, talking to us, and wish you all the very best for all your future endeavors. Thank you so much, Amna.
next guest is Dr. Tariq Qamar, with a PhD in Urdu literature, specializing in imagination in modern poetry. We welcome him to our show with great happiness. Welcome to our show, Doctor. Nice to meet you, and it's my honor and pleasure that I am expressing my views on this particular ground, and this is the very fortunate opportunity for me also. And this kind of ceremonies, special programs and literary ceremonies organizing over here, and I think this is the need of time. From a particular program and from a literary program, we can express our views. Especially, we have so many messages, but on this particular stage, from this particular stage, we can express the message of integrated through poetry. So we can unite different sects of society, different nations, different countries through our poetry. So this is very opportunate, and this is very fortunate for us. We are over here in Kuwait, and especially we are talking to people who are serving Urdu and Urdu literature, Urdu poetry. So I am very much thankful to you also. Very well said, Doc, because also India is so diverse with so many different states and different languages spoken. It is, I believe, these kind of poetry sessions do give us a chance to bring so many different people together on one platform. We're so happy to have you here. I believe this is your fourth visit to Kuwait? Yes, I have come here earlier also, but this is the fourth time I am coming over to express my views through my poetry, and this is the very fortunate for me that I can give a special message for both of the countries, both of the nations. Basically, we are working for strengthening our nations. We want to convey a special message from India to Kuwait, and we can strengthen our relation through poetry. So I am very fortunate, and what can I say? This is the very special occasion for me also. And as you said, just there are so many divergences, there are so many sections, and there are so many views through poetry. So this scenario is also being changed in India also. Now poetical background is being changed. New generation is coming to express their views through poetry, and that old traditions now being changed. Now people want to convey a special message through integrity, through our unity, and unity in diversity. You know, India is very famous in this particular environment. So this is the very special occasion, and I am very thankful to this organization who is organizing this kind of program, because this is the need of time. So we are attempting, we are trying our best, and you people supporting us. This is the very much thankful to you. I like what you mentioned about relationships between Kuwait and India, because our relationship goes back more than 50 years ago. You know, Kuwait and India have been very strongly bonded, and also if you notice, Kuwaiti tradition is very similar to Indian tradition. Our culture, our living together, our families bringing together for special occasions, festive occasions. So I believe they relate very much to our Indian. You have said very good, Amna. I think this is the transmission and transaction of our legacy, through our culture, through our heritage, through our literature. So people come from India to Kuwait, and they learn much. When they go back to India, they apply that formula, they apply their lifestyle, literature, and living standard also. So there are so many similarities over here. We can judge from India to Kuwait and from Kuwait to India. So this is the very good relationship, and I think this should be strengthening more and more according to passing of the time. Doc, before I let you go, I would want to know what inspired you to do a PhD in Urdu literature. How does that happen? Like, at what age did you know that you loved Urdu to the extent that you would do a PhD in that language? I am very thankful for this special question, because it related to my personal life. So I come from a family from where literature is the root of that particular family. My father was a poet of English and Urdu. Then legacy has come to me, so I am trying to adopt that particular legacy of poetry. And I was inspired with my grandfather, my father, and others, so many poets who appealed me very much from India, Pakistan, and other nations
So I am trying, and I want to express my views just to integrate different kinds of issues maybe over here, but just we are doing our work for the unity, for the strengthening of our nations. This is the particular background of our poetry. Before we go, could you give us a little poetry for our audience? Yes, I would like to read some new lines from my poetry book. There is a book, Just Have Come, Ganga Jamna Ke Sahilon Par, Dr. Tariq Qamar. That is the title of that particular book. So from that particular book, Ganga Jamna Ke Sahilon Par, Dr. Tariq Qamar. That was compiled by Dr. Kishwar Jahan Zaidi. So I would like to recite a special ghazal from that particular book. So If I'm not mistaken, you've already published 7 other books, right? yes, I have published 5 books and 1 PhD thesis, and this is the 7th books of that is compiled by Dr. Kishwar Jahan on my poetry and personality, both of being covered by that purpose. So I would like to recite some lines from that book. Irshad. कि खुद पे एक और क़यामत नहीं होगी हमसे, बहुत खूब. खुद पे एक और क़यामत नहीं होगी हमसे, दूसरी बार मोहब्बत नहीं होगी हमसे, खुद पे एक और क़यामत नहीं होगी हमसे, दूसरी बार मोहब्बत नहीं होगी हमसे. And these lines are for those people who are coming from India to Kuwait and from Kuwait to other nations. कि ये परिंदे हैं, ये परिंदे हैं जहाँ चाहे चले जाएंगे, ये परिंदे हैं जहाँ चाहे चले जाएंगे, हम शजर हैं कोई हिजरत नहीं होगी हमसे. ये परिंदे हैं जहाँ चाहे चले जाएंगे, हम शजर हैं कोई हिजरत नहीं होगी हमसे. And this couplet of poetry is special for your team and especially for an anchor of this particular team. कि हम शजर हैं कोई हिजरत नहीं होगी हमसे, इश्क की अपनी शरीयत है जो खामोश हैं हम, इश्क की अपनी शरीयत है जो खामोश हैं हम, इस खामोशी की वजाहत नहीं होगी हमसे. इश्क की अपनी शरीयत है जो खामोश हैं हम, इस खामोशी की वजाहत नहीं होगी हमसे. और एक शेर ख़ास तौर से हमारे उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं तमाम तर कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं. दे बिलीव इन सेक्रीफाइस, कि इस खामोशी की वजाहत नहीं होगी हमसे, इश्क की अपनी शरीयत है जो खामोश हैं हम, इस खामोशी की वजाहत नहीं होगी हमसे. और एक शेर, एक मतलब एक शेर में पेश करना चाहता हूँ तमाम लोगों के लिए कि जो आपका टीवी बहुत पसंद करते हैं, जो आपके इस टाइप के प्रोग्राम्स बहुत पसंद करते हैं, ताकि उनको ये एहसास हो कि के टीवी जो है वो उर्दू के हवाले से क्या खिदमत अंजाम दे रहा है. मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि अब कहाँ जाएं कि खुद राह की दीवार हैं हम, अब कहाँ जाएं कि खुद राह की दीवार है हम, अब कहाँ जाएं कि खुद राह की दीवार हैं हम, कोई जंजीर नहीं फिर भी गिरफ्तार हैं हम. अब कहाँ जाएं कि खुद राह की दीवार हैं हम, कोई जंजीर नहीं फिर भी गिरफ्तार हैं हम. और तुमसे बिछड़े हुए कुछ दिन ही हुए हैं लेकिन, तुमसे बिछड़े हुए कुछ दिन ही हुए हैं लेकिन, ऐसा लगता है कई साल से बीमार हैं हम. तुमसे बिछड़े हुए कुछ दिन ही हुए हैं लेकिन, ऐसा लगता है कई साल से बीमार हैं हम. और एक मुद्दत से ये मंज़र नहीं बदला तारिक, एक मुद्दत से ये मंजर नहीं, एक मुद्दत से ये मंज़र नहीं बदला तारिक, कोई उस पार है ठहरा हुआ इस पार है. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. सो नाइस ऑफ यू. यू गेव मी ए चांस टू पार्टिसिपेट, टू express my views over here. Thank you very much, Amina. This occasion has been organized in the honor of the legend Khumar Barabankavi. We are fortunate to have been able to find his grandson who would also be participating in tonight's poetry session. Welcome to our show. शुक्रिया. बहुत खुश आमदीद. फैज़ खुमार, जी जी. आपका तखल्लुस? फैज़ खुमार बाराबंकवी है मेरा तखल्लुस. जी. आप कुवैत पहली दफ़ा आए हैं? नहीं, मैं दोबारा आया हूँ. सन 2015 में हाज़िर हो चुका था. 9 अक्टूबर को एक मुशायरा हुआ था जिसमें मैं हाज़िरी हुई थी. मेरी एक अंजुमन का मुशायरा था. तो आप वाकिफ़ हैं कि कुवैत की जो ऑडियंस है वो किस तरह रिएक्ट करती है, कितने प्यार से मकबूलियत है? आज ये तो अंदाज़ा हो चुका था कि कुवैत के लोग शेर सुनना पसंद करते हैं, और उन लोगों का मामला ये रहता है कि अगर अच्छा शेर उन्हें लगा तो वो बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं, और अगर शेर नहीं पसंद आया तो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं. तो कुवैत का मामला हाँ, कोई टमाटर नहीं आता स्टेज? नहीं 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 नहीं.
और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ बहुत संभल के कदम रखने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सामने महफ़िल बैठी हुई है वो एक अदबी महफ़िल है और उनको सब कुछ पता है इस बारे में कि कहाँ पे किस चीज़ पे कहाँ पे दाद देना है। तो बड़ा अच्छा लगा कुवैत में पहली बार जब हाज़िर हुआ, फिर दोबारा आने का मौका मिला। ऑल इंडिया कल्चर एसोसिएशन कुवैत की तरफ से मेरे दादा के नाम से ये मुशायरा मुनक्किद किया गया। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आमिर सिद्दीकी साहब का, संजय सक्सेना साहब का, अली मेमन साहब का, पूरी टीम का कि हिंदुस्तान से इतनी दूर मेरे दादा की याद में ये मुशायरा मुनक्किद किया गया। अच्छा, वैसे आपके दादा के तारुफ से तो मैं जान चुकी हूँ कि आपने ये कहाँ से, ये आपको विरासत में मिली है ये, बट क्या आपको पहले से ही मालूम था, घर के इस तरह के माहौल की वजह से ये हुआ, या आपको भी शौक़ था, या अम्मी अब्बू ने जो है ज़बरदस्ती उर्दू पढ़ाकर डांट डपटवा कर आपको शायर बनवा दिए? नहीं, ये ऐसा कुछ मसला नहीं रहा कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कहीं हुई। ये तकरीबन हमारे साथ ये 150 साल से ज़ाती मामला है। 1890 से हमारे घर में शायरी होती चली आ रही है। मेरे दादा खुमार बाराबंकवी के वालिद साहब बहार बाराबंकवी और करार बाराबंकवी साहब वो भी शायर थे, और मेरे दादा के छोटे भाई निगार बाराबंकवी, मेरे वालिद सुरूर बाराबंकवी और फिर मैं। हाँ, तो ये माशाल्लाह मैं चौथी पीढ़ी हूँ अपने घर से कंटिन्यू जो मुशायरे के स्टेज पे मौजूद हूँ आज भी। माशाल्लाह। आप कुछ सुनाना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? अब मैं एक शेर हाजिर कर दूंगा कि शेर देखिए कि साथ तेरे जो चल रहा हूँ मैं, साथ तेरे जो चल रहा हूँ मैं, जाने कितनों को खल रहा हूँ मैं। साथ तेरे जो चल रहा हूँ मैं, जाने कितनों को खल रहा हूँ मैं, और मेरा शजरा उठा के देखो तो आबरूए गज़ल रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया सब। रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपको, कामयाबी बहुत खुदा दे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं तमाम सुनने वालों को, इस चैनल को देखने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कुवैत के लोगों ने बड़ी मोहब्बत की और मेरे दादा के नाम से ये मुशायरा मुनक्किद किया। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी का। थैंक यू। शुक्रिया। It's now time to talk to the backbone of this entire organization and the event. Welcome to our show. Thank you. Myself, Sanjay Kumar Saxena, President, All India Cultural Association. And I am here in Kuwait since last 25 years and doing a lot of things are there, and this is our main program, Mushaira. Why do you conduct these kind of mushairas? What's the reason behind doing this? Mushaira, so many people thinks this is a Urdu program. So lot of people say this is Urdu, I don't know Urdu, so I don't want to come. But I convince lot of people, this is a Urdu poetry. If you sit and see this program, you will understand what we talk in everyday scenario. So our main thing is that we want to exchange the culture between Kuwait and India. What is our culture there? We want to show them this is our culture. We are not different. So that's why cultural activity we want to bring it here, and people can see
कि what is their culture, and they can learn also. And the first thing is that in both the culture there is no different, all the similarity, but the accent and all, this is the different. Yes, very slightly different, but really overall the culture is very similar between Kuwait and India. Yes, yes. Mr. Osama, I'd like to find out more about your organization. I believe it's a growing one, like you have more volunteers coming in. Yes, let me just introduce myself for the viewers who don't know. My name is Osama Faruqi, and I'm the Vice President of All India Cultural Association. As I mentioned, that since last year we have grown a little bit more. We have added a few more members who are actively working, and as you can see, compared to last year, this year our event is a bit more bigger, than compared to last year, and we have had a lot of calls and reviews before the event is going to run tomorrow actually. So we are all busy with that. As you can see, it's like everybody's busy doing their things, and the idea of doing this every year is to kind of, as I told you last time, to kind of bring our culture here to Kuwait. And since the highest population is the Indian population, and you'll be surprised that this genre is not only for the North Indians, but it is also the South Indians also listen to it. So we were surprised that we were getting calls from people who are from Madras and these places that we would like to have passes and we would like to attend your show and see how it is. It's not about the language; it's about the way you express it, basically. So as you've interviewed a lot of poets who are here right now, a few of them rather, you've seen that all of them have the different ways of expressing their point of view, whether it's romance or it's politics or it's their day-to-day life, comedy, whatever it is. In fact, so we have gathered, you could say, a wide range of poets for the Kuwait people to enjoy, and I would like on this platform I would like to say, please come and enjoy the show, and we'll see you there. There's lots of excitement and lots of buzz going around for this. I wish you every success. We'd also like to know, we're curious about what your next endeavor is going to be. Well, it's in the pipeline. We are trying to do facilitate, or you could say, in memory of Mr. Kefi Azmi actually. And we're trying. It's in works in the pipeline, and we're planning to call Shabana Azmi and Jawad Akhtar Sahab. We'll keep you informed shortly as and when it happens. That's great. We'll be looking forward to it. A lot of people in Kuwait super excited. We wish you the very best and for the great work you do in keeping the language alive. Thank you so much. And I just want to mention here, what is Shair? Shair who just write the words very nicely from his heart, and he is writing and speaking in front of the public, that is Shair. So that's why I want to mention, because a lot of people are doing different shairi. Yes. So here in our program, there is a lot of Shair. They are very famous in India, and they are doing the very good shairi, and they are all very, very good Shairs. So please just listen them. Thank you. This brings us to the end of this episode. Sadly, we had only enough time for this many to cover today. But next week, we bring to you the remainder of all the other poets. We hope you stay with us. Until next week, from the team of Kuwait TV2, stay blessed.